and good morning, good afternoon to everybody. देखिए मैं I can use a mixed language I think because all kind of and I try to be good in both and I'm here. I should thank Dr. Manmohan Rahul and Sharda University for this opportunity. This is opportunity for me to be in touch with the young people because you are studying what you are studying and how it can be implemented in your life. For that I am here and I am so thankful for the convener Dr. Aditi Chaturvedi, Dr. Manmohan Rahul, and Dr. Vineet Suri and Professor Sandeep Anand, and especially Dr. Sally Lucas. Thank you very much. आपको और आप एक एग्जाम्पल देखिए यहाँ क्वेश्चन एंड आंसर एंड बाय डूइंग दिस एंड हेल्पिंग ईच अदर्स you find this young person in red t-shirt sitting here. His name is Tapas Gupta and he is currently in business. He will tell you how we met and how we did. Just please come. आपको मुझे थोड़ा रेस्ट मिलेगा और he will be able to tell you his story. Thank you. So myself, Tapas Gupta, I'm a founder and director of import-export business. My business is Galaxy Marketing. We do all import packaging from so many countries, more than 13, 14 countries. We are doing business for last 18, 20 years and because of Dr. Ashok Gupta Thinker, he has inspired me for import-export business as he was already in import-export business so long. So he inspired me, and that time I also was in college like you people. That me was also like you. So I was inspired by him very much. So I really was inspired, and there was no my family background, as Dr. Manmohan Singh told you, that there was no my family background about the import export business. We were in cable TV network, cable TV business. Earlier there was a local cable TV network business, and also I have introduced first time in India, that time in 2002, the broadband connections. So that was because of that reason I was little close to so many importers and exporters. That's why I met with Ashok sir in Chandni Chowk in gold market, where he was in gold business, in import or export of jewelry. So that time I met with him and he inspired me. So I always told him, why not you take me to US, UK, and Germany, joined here and doing their successful business in import export in 4 5 years. और आज भी ये हम फ्री हमारे सेशंस होते हैं जूम पर जो ये सब अवेलेबल होता है और आप सब फ्रीली सब कुछ पूछ सकते हैं. तो जो लोग अपना फीडबैक फॉर्म भर के देंगे उनको हम उसमें ज्वाइन कर लेंगे सबको. I have traveled in more than 28 countries. Sir, I want to tell something. Yes, please. देखिए बहुत सारा बिजनेस आप करना चाहते हो बट क्या होता है पल पल पे आपको पता नहीं लगता हम स्टार्ट कहां से करें. यूनिवर्सिटी वगैरह बहुत कुछ आपको सिखाती है बट जहां पे इंप्लीमेंटेशन की बारी आती है वहां पे आपको चाहिए होता है एक एक्सपीरियंस मेंबर जो कि डायरेक्ट बिजनेस को स्टार्ट कराए. गॉट इट. सर के पास है 49 इयर्स का एक्सपीरियंस और अप्रॉक्स 28 कंट्रीज में सर ट्रेवल कर चुके हैं और विदाउट एनी एक्सपेंस. एक्सपेंस कौन देती है? कंपनी. अगर हमारी खुद की एक कंपनी हो तो ऑटोमेटिक एक्सपेंस देगी आपको ट्रेवल करने के लिए. तो एक ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस एक सिर्फ एक ऐसा बिजनेस है जो आपके पूरे आपकी जो जर्नी है उसका एक पार्ट बनता है. तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज इसको गौर से सुनिएगा. अब कि हम यहां पे क्यों आए हैं बेसिकली आपको बिजनेस को देखिए यूनिवर्सिटीज जो होती है वो आपको स्टार्ट सिखाने के लिए बहुत अच्छी है बट जहां पे आपको इंप्लीमेंट की बारी आती है वहां पे आपको क्या लगता है कि यार इंप्लीमेंट हम कहां से स्टार्ट करें, पहला स्टेप कहां से ले. गॉट इट. सबको प्रॉब्लम्स होती है
यूनिवर्सिटीज आपको सिखा देंगी, सब कुछ करा देंगी, आपको कॉस्टिंग कैसे निकलती है, बेसिकली मेन क्या है कॉस्टिंग। वहां पे $400 की कोई आइटम है, आपको यहां पे आके क्या रेट पड़ेगी कैसे पता, आप बताओ। आपको बस ये पता है कि डॉलर का एक्सचेंज रेट ये होगा, दैट्स इट। बट एक्चुअल में जो उसका, जैसे हम यहां से दिल्ली से हम यहां पे आए, कितनी रेड लाइट्स पड़ी, कितने जाम्स लगे, वो कौन बताएगा। वो डायरेक्ट आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं लोगे तब तक आपको नहीं पता लगेगा। तो ये आपका मोटिव है। अब अगर आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं करा, आपने स्टडीज कर ली बट वहीं आपने इंप्लीमेंटेशन नहीं करा, तो आपके लिए वर्थलेस है वो। तो ऐसे ही आज का सेशन। अब बात होती है हमारी कंट्री की, हमारी कंट्री कहां पे है, किस पोजीशन में है, इंपोर्ट में और एक्सपोर्ट में। गॉट इट। आपने बहुत सारे डाटाज देखे होंगे बट ये हम आपको थोड़ा सा पुराना डाटा दिखाने, क्योंकि अभी क्या है एग्जैक्ट डाटा नहीं आया है। ठीक है, अब बात होती है, देखिए हमारी जो कंट्री है, अगर इंपोर्ट की बात करें तो इंपोर्ट अभी हमारी कंट्री 9th नंबर पर है और इतना इंपोर्ट हुआ है। और वहीं अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो हमारा एक्सपोर्ट अभी बहुत कम है। तो हमें एक्सपोर्ट्स बढ़ाना है। और मैं आपको बता देता हूं, एक ऐसा बिजनेस सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है जो गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, मोदी गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है। तभी आज लोग आप यहां पे आए हो। तो जो गवर्नमेंट है वो सिर्फ एक इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस है, क्योंकि जब तक हम इंपोर्ट नहीं करेंगे रॉ मटेरियल, तब तक हम फिनिश गुड्स को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। Experience. My question would be, when you are selecting the first niche, why did you select that niche? How did you find seller? How did you find a buyer? What is the reason behind you selecting that particular niche? Right. What's your name? Ashraf. Ashraf. Yes. थैंक यू अशरफ भाई, एटलीस्ट यू स्टार्टेड द बॉल रोलिंग। देखिए मैं भी, आप क्या समझ रहे हैं, मैं भी कभी कॉलेज में था, लेकिन मैं अगर समझता हूँ आई वॉज ए बैक बेंचर इन माई टाइम, लेकिन क्वेश्चन पूछने में मैं जरूर आगे रहता था। तो क्वेश्चन पूछना अगेन इज ए बिग क्वालिटी, कि इन्होंने पूछा क्या सोचकर हम वो चुने वो पर्टिकुलर। तो दे आर सो मेनी थिंग्स। देखिए ऐसा नहीं हो सकता कि एक प्रोडक्ट सबके लिए अच्छा हो। वो प्रोडक्ट हम उसको देखते हैं, बिल्कुल इट इज लाइक यू नो राइट नाउ वी आर टेलिंग गुड थिंग्स अबाउट हेल्थ, बट इफ समबडी वांट टू गो फर्दर then we talk one to one with him, like with a doctor or with a lawyer or with anybody you see. We see everything, his background, his what he want to have in mind. Suppose somebody is from a coconut producing area, somebody is from a Kerala, most of it black pepper is there. So nearby things are available. Some people from Nasik, a lot of vegetable goes from there. So we will try in the first place कि वो उनके अपने आसपास से ही कुछ हो। लेकिन ये एक पहली चीज है। फिर कंट्री सेलेक्ट करना, क्योंकि उस चीज का प्रॉपर कंट्री कौन सा है, दिस फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस वी गिव ए help to you, suggestion to you, we discuss with you, then we go further. As it is told, product selection is one of the main thing. And sometimes you think, should we do imports or exports? A small gift for the It's not a small.